So one of the example of the artificial intelligence is self-driving cars. Self-driving cars, you might have taken an example of a Tesla car or Audi car, that they have the ability to auto park themselves, they have the cruise control. They do not mostly need humans to drive them on long journey. What it basically do is that it has sensors placed on the four corners of a car, and it sends any object or obstacle that is coming ahead. For example, if it is in close proximity or not. If it is, they manage themselves in that way so that they are easily being driven on the road without any major accident. This is also an example of artificial intelligence, and I'm again repeating artificial intelligence, that this is the way to act like human, to give machines and robots to work like humans, giving them the human ability so that they can react and make decisions like a human do. They are capable of actions such as learning, planning, and recognizing your problem so that they can work on the solutions of that. Artificial intelligence always has a knowledge base, a knowledge engineering, that whenever there is any circumstances, what they do is that they access their knowledge base and then they establish the relation or the decision based on that. I also discussed with you some parts of the machine learning as well, that machine learning is a core part of an AI that allows AI machines to establish patterns so that they have their ability to analyze and learn that if this is the scenario, that what I should be doing. Advantages and disadvantages, we have already discussed that, but when it comes to a self-driving cars, we can see that, for example, if a human is driving car, what a human mostly do is that I mostly check around me that if there is any obstacle, should I move ahead? Should I will not be coming across any sort of accident? So you see that I'm making use of my sensors, like I'm checking on the left side, on the right side, and similarly, if I give this ability to a machine, to a computer, so they can navigate better than humans because of their precision and because of their accuracy. However, there can be certain disadvantages as well. There can be several, again, moral and ethical aspects that it will not take into account. One aspect is that the quality of your car is based upon will be affected by the abilities of your programmer that is going to create it. For example, if you come across any sort of mechanical damage, and that is not under the control of a robot, or that is not under the control of that machine, so there are certainly disadvantages as well. Basically, AI is used to identify the patterns and trends in the data so that they can be used to form your discoveries, or the learning ability of the AI can be used to ask the machine itself to provide its own decisions. Right now, I'm discussing about the machine learning. Machine learning, like, let me give you an example. For example, as we grew up, our perception and our reality or our opinion is mostly based upon our surroundings. I hope that you will agree it to me that whatever perception I have, whatever opinion I have, whatever expectation I have is due to my surrounding. For example, if I am born in a rich family, my surroundings or the people around me or the clothes I wear, the car I drive, the mobile phone I hear is mostly going to be a lead that is going to define my trends, my pattern. That if I need something, this always has to be one of the top class. But similarly, if I'm from a middle class family, that means that my expectations, my opinions, my belongings can be a little bit different. Similarly, that's how AI identify patterns and trends in the data. What I just do is that I provide them a data and then I instruct the machine to construct its own hypothesis or discoveries based on that data. So based on that data, the machine is going to make the decisions. Like, for example, if the machine is given a task, and I have given him some certain conditions. I also need to instruct the machine that these are all of my symptoms, these are all of my instructions. So what do an AI do is that it is going to identify the trends and the patterns, and then
form the discoveries that the machine should do this and that. So this is basically to be known as the data analysis that is also conducted by your AI. I hope this is clear to you. Do you have any queries? No, sir. So can you tell me that how data analysis can work in a self-driving car? Like there could be a question. Or do you feel about the too much reliance of society on the ability of artificial intelligence? Yes. That's a question. I'm asking that how data analysis can work in self-driving cars. Data analysis, like AI. For example, Mm, AI can be used in self-driving cars and in hospitals, okay, just and first explain me what do you understand by data analysis. Di- it's Hmm. Or basically AI. okay, let's do one thing. Can you define me what is an AI? It is a machine made by humans, and it acts as a almost like a human, but it can do everything better than a human. How do an AI make decisions? Uh, they have rules and they make decisions based on those rules And those rules are supported by my by a knowledge human base. knowledge base. And what do I provide in my knowledge base? Mm, Data. That the purpose of an AI is to identify the patterns and trends in that data. And identifying those patterns and trends in that data is known as data analysis. Are these terminologies clear to you? Like, what is an AI? An AI is that if I'm mimicking human tasks so that they can be done efficiently, but how it works. I take help of machine learning. Machine learning helps me by taking into account my past experiences. It is going to analyze the data that, for example, if this is the case, this is the condition, I should work in this way. All of this data is being provided to you in your knowledge base. Knowledge base का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर है। हमारा ब्रेन क्या है? हमारा नॉलेज बेस। मुझे कोई mm, भी चीज़ सोचनी होती है, समझनी होती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो मैं अपने जहन का इस्तेमाल करता हूँ। मैं उससे अपनी चीज़ों को सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ। उसके बाद डिसीजंस लेने के लिए मैं अपने जहन से ही बात करता हूँ कि मेरी जो बाउंड्रीज हैं वो ये है। मेरे पास मेरी रिलीजियस बाउंड्रीज हैं, मेरी एथिकल बाउंड्रीज हैं। ये क्या है? मेरे रूल्स हैं। इन बाउंड्रीज को मैं क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन ये रूल्स सेट किसने किए हैं? मेरी नॉलेज बेस ने, मेरी अपब्रिंगिंग ने, कि मैं किस तरह से, मेरी फैमिली ने मेरी अपब्रिंगिंग की है। इसी तरह से अगर मैं एक एआई की बात करूं, फॉर एग्जांपल एक रोबोट है। अब एक रोबोट के अंदर अगर एआई आपके पास मेंशन्ड है तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मिमिकिंग ह्यूमन टास्क, लेकिन उसको कैसे पता? उसके पास रूल्स बेस हो सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको कौन बताएगा? उसकी नॉलेज बेस, कि अगर ये कंडीशन हो तो आपने ये करना है। उसके बाद अगर उसको मैंने काफी सारा डाटा दिया, कौन सा डाटा दिया? जो भी मुझे अपना टास्क प्रोसेस करना है, तो वो उस पूरे डाटा को एनालाइज करेगा, उसके अंदर पैटर्न ढूंढेगा, उसके अंदर जो है वो ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करेगा, अपनी खुद की इन्वेंशन, अपनी खुद की डिस्कवरी बनाने के लिए। और फिर जो है वो उसी के ऊपर काम करेगा। मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से मशीन जो है वो सीखती जा रही है कि पहले मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था। जो चीज़ें मैंने अपने मशीन को नहीं बताई, वो भी वो एक्सपीरियंसेस से सीखती जा रही है, क्योंकि इट हैज़ द एबिलिटी टू लर्न। Are you getting this? What is an AI? What is knowledge base? What is rule base? What is data analysis? yes, sir.
अच्छा जी, इसके बाद आई एम मूविंग ऑन टू योर ऑगमेंटेड रियलिटी, दैट इज टू बी नोन एज अ वी आर और एन ए आर। अब बेटा, augmented reality is where technology overlays computer generated images into a user view of a real world. You might have seen मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में हमारे पास वी आर मैंशन होता है, या PS4 या PS5 के अंदर भी ये मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दैट यू हैव दिस हैंड हेल्ड डिवाइस, और इसको मैं अगर अपने आईज के ऊपर प्लेस करता हूँ तो इट बेसिकली गिव्स मी अ डिफरेंट डायमेंशन इमेज दैट मेक्स मी फील लाइक दैट आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. This is artificially created to trick your brain into a world that is not into existence, just for your testing purposes, your educational purposes, your marketing, technology, gaming purposes. It could be anything. बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि जैसे ही मैंने इसको अपने आइस के ऊपर जो है मैंने रैप अप लगाया, सो इट इज प्रोवाइडिंग मी एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट जो मेरे यूजर का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर बनाता है, जिसमें आपके पास टेक्स्ट हो सकते हैं, साउंड हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी रियल एस्टेट में कोई भी मैं अपार्टमेंट बना रहा हूँ, लेकिन अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, उसके अंदर जो है वो एफर्ट लग सकती है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ पैसे लग सकते हैं, बट बिफोर दैन दैट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी विजुअलाइजेशन करता हूँ कि हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. अभी मेरे पास वो प्रोडक्ट रेडी नहीं है, लेकिन मैं अपने कस्टमर को दिखाना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में वो कैसे लगेगा. तो आई कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी वीआर, जिसमें कस्टमर खुद एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को उस जगह पे रख के देख सकता है कि हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. AR is actually a very relative old technology जिसकी एग्जिस्टेंस 1960 से है, बट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसकी पोटेंशियल जो है हमें पता चलती जा रही है. पोटेंशियल इस वजह से पता चलती जा रही है कि अगर मैं डिजिटल कैमरा से पिक्चर लेता हूँ तो दैट्स जस्ट अ पिक्चर, मैं अपने आप को सिचुएशन में प्लेस करके नहीं देख सकता. बट विद द हेल्प ऑफ एन AR और अ VR, इट्स गोइंग टू लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन दैट एग्जैक्ट वर्ल्ड. या जैसे टीचिंग के अंदर भी देयर इज वन अनदर इन्वेंशन रिलेटेड टू VR और AR, दैट्स लाइक राइट नाउ आई एम टेकिंग योर ऑनलाइन क्लास. बट सिमिलरली आई बिलीव के एज द वर्ल्ड एंड टेक्नोलॉजीज अडेप्ट इटसेल्फ, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम AR और VR के ऊपर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड, आई एम इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, द टेक्नोलॉजी सेज दैट correspondingly distance really doesn't matter. With the help of the technology, I can come exact at your place and teach you like a physical teacher that is being teaching. इस और मैं अपने घर पे ही रहूंगा, बट दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन AR और VR के मैं अपने आप को किसी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर लेके चला जाऊं, जहाँ पे जो है आपकी भी अवेलेबिलिटी हो. अब मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो मेरे घर पर ही है, एंड यू आर ऑल्सो इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट विद द हेल्प ऑफ बीइंग डिजिटलाइजली कनेक्टेड टुगेदर और बीइंग इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियली जनरेटेड एनवायरनमेंट, मकसद ये है कि वो एनवायरनमेंट असली में नहीं है, वो एनवायरनमेंट मैंने बनाया है. बट दिस कैन इंक्रीज मैनी एक्सपेक्ट्स. मार्केटिंग में काम हो सकता है, एजुकेशनल में काम हो सकता है, मूवीज के अंदर तो आपने भी देखा होगा, सिनेमास के अंदर 3D क्लासेस है, बट दैट्स इज नॉट एग्जैक्टली दैट्स उससे एक आगे का वर्जन है ऑगमेंटेड रियलिटी में, जिसमें यू कैन एक्चुअली फील दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. There can be certainly advantages and disadvantages of an AR, and AR के advantages can be it can make learning experience both entertaining and more immersive. It can also be used to stimulate and communicate immediate information, creating a better experience. It can also allow users to stimulate everyday experience in an efficiently manner. उनका experience बेहतर बना रहे हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी भी शॉपिंग स्टोर पे जाऊं और मैं बोलूँगा यार मुझे ये सारे जो डिजाइन है मुझे पसंद आ रहे हैं, अब मैं वन बाय वन तो किसी को हर चीज को चेक नहीं करूंगा ना. आई कैन टेक द हेल्प ऑफ अ VR, जिसमें वो आर्टिफिशियली मैं उन क्लोथ्स को वेयर करके देख सकता हूँ. दैट इज गोइंग टू सेव माई टाइम विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी. दे कैन ऑल्सो बी यूज टू नेविगेट अ न्यू प्लेस. नई जगह पे आना जाना मेरे लिए आसान हो सकता है. आई जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी शोरूम के अंदर जाता हूँ, मुझे गाड़ी पसंद है, अब
सिमिलरली मैं उस गाड़ी को रोड पे लेके जाऊं, मैं उसकी ड्राइव ड्राइव लूँ, कंपेरेटिवली आई कैन यूज एन ए आर और वी आर जो मेरे लिए आर्टिफिशियली जनरेट कर दे उस एनवायरनमेंट को। आई कैन मेक इट फील के व्हाट इट रियली फील्स लाइक। However, there can be disadvantages as well. Disadvantages can be कि it can be based। अच्छा, disadvantage ये है कि कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा के ऊपर है। और कुछ लोगों को जो है इसके प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि उन्हीं का डाटा यूटिलाइज हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मशीन लर्निंग के अंदर कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के डाटा से मशीन अपने आप को बेहतर से बेहतर बना रही है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इट कैन मॉडिफाई अ पर्सन्स परसेप्शंस ऑफ रियलिटी एंड इट कैन कॉस्ट अ ब्लर डिस्टिंक्शन बिटवीन टू। मकसद है कि रियलिटी कुछ और हो सकती है, परसेप्शन कुछ और हो सकता है। जैसे कि मुझे ये है कि यार आर्टिफिशियली जनरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर तो आई वुड नॉट फील लाइक इट्स एन ओरिजिनल वन। तो ऑब्वियसली आपकी परसेप्शन और उसमें एक डिफरेंस आ सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द डेटा टू एन स्मूथ एयर प्रोसेस, इट हैज टू बी वेरी पावरफुल। अगर पावरफुल है तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो डू यू हैव एनी क्वेरीज? No, sir. अच्छा, जस्ट अजान हो जाए, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मीनवाइल यू कैन कंटिन्यू रीडिंग दिस। Okay. AR is also used in your gaming industry as well, because it allow people to augment their surround reality to find any collect different items as well. I'm not sure if you are into this gaming industry or not, but there are certainly games and technologies adapting itself in the latest versions of PS4, PS5 और in the Xbox नहीं, Xbox में नहीं, PS4 या PS5 के अंदर है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जिसमें आपके पास जो डिफरेंट गेम है, जैसे हैरी पॉटर है। अब हैरी पॉटर का एक डिफरेंट वर्ड्स है, हॉगवर्ड्स का। अब व्हाट डू दिस AR एंड VR AR डूज दैट, इट makes you feel like that you are in that exact world। सो गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपका बेहतर बन रहा है। मेडिसिन के अंदर भी बेटा यूज हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो सर्जन्स को अलाउ कर रही है कि वो इमीडिएट इंफॉर्मेशन को अडेप्ट कर सकें। सर्जन्स जो है दे कैन वेयर स्मार्ट ग्लासेस, इट वुड अलाउ देम टू रिक्वेस्ट एक्सेस टू एनी पेशेंट रिकॉर्ड इमिजिएटली ड्यूरिंग सर्जरी। AR से VR से जो पेशेंट का डाटा है वो एकदम से वो अपने पास उसको एक्सेस कर सकते हैं। दे कुड अलाउ द पेशेंट उसकी जो सर्जरी के प्रोसेस के अंदर दे कैन हैव द इमीडिएट एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर दैट इफ यू हैव सीन दैट मूवी और नॉट, आयरन, हाँ आयरन मैन। आयरन मैन के अंदर जो उसका जो स्क्रीन होती है, उसकी स्क्रीन के ऊपर सारी जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही होती है दैट ही कैन टैप इनटू if he want to Yes. access that certain information or not, just like a form of a smartwatch or a computer। तो मेडिसिन्स के अंदर भी दे कैन वेयर दोज ग्लासेस, और उन ग्लासेस से दे कैन टेक एनी इंफॉर्मेशन दे वांट टू। हमारे पास AR के साथ एक और टेक्नोलॉजी है, दैट इज VR। बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस के AR और VR के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो जी रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट अ मोमेंट।
आई एम जस्ट ओपनिंग अ वीडियो जिसमें इट वुड बी इवन बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये एआर और वीआर क्या है. ओके, दिस वन. But what does it mean? And what are the differences? AR stands for augmented reality. You use a device, like a phone, to overlay a digital element onto the real world. This is limited to the size of your screen. You also have augmented reality glasses. These normal looking glasses will place slightly transparent holograms onto your surroundings, but you can't really interact with them, aside from using buttons on the glasses themselves. VR stands for virtual reality. You put on a non-transparent headset, which shows you a completely digital environment. This means you can hang out in space or travel the world in 80 minutes, for example. Pretty cool, but you can't see your actual surroundings. So take care and don't bump into anything. You may need controllers to move around or interact within the VR world. These are usually included with the headset. MR stands for mixed reality. You use a एमआर इज headset नॉट अ that पार्ट ऑफ योर overlays सिलेबस, लेकिन like the सिर्फ HoloLens. एआर और वीआर के अंदर एक डिफरेंस ये है कि stands for राइट augmented हियर यू कैन reality. सी कि इसने जो है मोबाइल फोन से एक पिक्चर ली है To overlay a digital element onto और मोबाइल से पिक्चर लेने के बाद नाउ जस्ट चेक कि व्हेन अब एआर का इसने ग्लास अपने पास ओपन किया तो आई एम हैविंग दैट एग्जैक्ट इमेज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. आई कैन move the items here and there as per my reality, like you can see. But the point is that I cannot fully interact with the objects. Whereas in terms of a VR, that's a complete different world. A VR can let you go into the space. A VR can let you travel to any part of the world because आपकी जो surroundings है वो artificial है. You can go on to the moon, you can go to this Mars, you can go to space. कहीं भी आप चले जाएं क्योंकि एक virtually एक world बन रहा है ना, एक virtual reality. रियलिटी मीन्स कि किसी भी चीज की असल एग्जिस्टेंस, लेकिन अगर मैं उसको वर्चुअली बनाता हूँ तो वर्चुअली मीन्स कि मैं आर्टिफिशियली जनरेट कर रहा हूँ. यू कैन मूव द आइटम्स हियर एंड देयर. आई एम ऑल्सो सेंडिंग दिस लिंक ऑफ द वीडियो टू यू एज वेल. going. सो बेटे नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस virtual reality. A virtual reality, it allow a users to experience a computer generated image that doesn't exist. मतलब ये कि मैं आर्टिफिशियली जनरेट कर रहा हूँ. अ कंप्यूटर कैन यूज टू जनरेट अ 3D स्पेस. जैसे कि मैंने अभी बताया, यूजर जो है उस इमेज को या उस वर्ल्ड के अंदर जा सकता है एक हेडसेट के साथ, और द हेडसेट विल नॉर्मली इनकॉर्पोरेट अ विजुअल डिस्प्ले. VR is one of the most prominent technologies that you can see in your PlayStations that have an immersive advantage. However, it can have the different number of advantages and disadvantages. What the syllabus expects from you, that you should be knowing that how to write in simple words what is an AI, what are the advantages, disadvantages of an AI? What is machine learning? What is knowledge base? How it all integrates with each other? How an AI can work you in a self-driving car? What is the impact of AI on your society? What is an AR? उसके advantage disadvantages क्या हैं? वो उसका society पे क्या impact पड़ रहा है? तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइट हेयर. मैं वीडियोस भी दे रहा हूँ बट आई वांट यू टू टेक अ क्लोजर लुक इनटू दिस चैप्टर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं. आई कैन एक्सप्लेन यू बट यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट द करेक्ट थिंग इन योर पेपर. तो एक काम पहले ये करना, इस चैप्टर को गो थ्रू कर लेना, फिर मैं इसी के पास पेपर्स कराऊंगा. Okay, sir. सो मतलब मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ ना कि ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मैं बता ही इसी वजह से रहा हूँ आपको कि ये सारी चीजें जो है पेपर में आ सकती हैं. अब जाहिर सी बात है पूरी बुक तो नहीं आएगी, लेकिन पढ़ाते हुए नोट किया करो. मैं पूरी बुक नहीं पढ़ाता, मैं उसमें से सिर्फ कुछ पॉइंट्स निकाल के आपको बताता हूँ कि इसका मतलब ये है, ये है, ये है. इसका मकसद ही यही है कि आपने अपना आंसर कैसे डिलीवर करना है.
Okay. So what are some of the advantages and disadvantages of an AR? It can be used to stimulate critical situations for organizations such as आर्मी की ट्रेनिंग के अंदर हम अपने सोल्जर्स को किसी भी एक्चुअल वॉर के अंदर नहीं भेज सकते उनकी ट्रेनिंग के बगैर. So what we can do is that we can create a virtual environment and we can send them virtually to an environment जिसमें उनका कोई physical damage ना हो, but they can be utilized ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो, उनकी ट्रेनिंग डेवलप हो. ये किसके एडवांटेजेस है. इसको बेटा वी कैन ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड अ वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस इन टू अ डिफरेंट रियलिटी देन द इमीजिएट रियल वर्ल्ड. मकसद ये कि देखो असल दुनिया की जो रियलिटी है वो तो डिफरेंट है ना, लेकिन एक अगर मैं एक इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि मैं उसको जनरेट कर रहा हूँ जो मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है. पहली बात तो ये कि लोग गेमिंग करते क्यों है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स देम अ रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड्स देम अ काल्मिंग सिचुएशन, इट हेल्प्स देम रिड्यूस स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज. मतलब आई एम पर्सनली मैं खुद भी गेमिंग करता हूँ बट व्हाट आई फील लाइक इज दैट इट्स अ एस्केप फॉर मी. मतलब दुनिया भर की टेंशन है तो वही है ना, बट वेन एवर आई एम प्लेइंग अ गेम ऑन अ PS4 और अ PS5 इट जस्ट मेक्स मी फील लाइक दैट मैं इस दुनिया में से निकल गया हूँ और आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. So this is why I'm using these technologies because it has numerous advantages, but at the same time disadvantages भी हैं. It can help build a people's confidence if they want to replicate a situation. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी रियल लाइफ में है तो आपने क्या करना चाहिए. डिसएडवांटेजेस बेटा इसके ये है कि इट कैन बी अचीव परफेक्ट कैलिब्रेशन बिटवीन कैमरा एंड यूजर. जो है ये डिफिकल्ट हो सकती है, मतलब हमेशा से एक्यूरेट नहीं हो सकता और कभी कभार गेम खेलने से यू कैन फील मोशन सिकनेस, यू कैन फील इल. और जो टेक्नोलॉजी है VR की दैट इज ऑब्वियसली अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी एंड सम पीपल थिंक दैट देर इज अ डेंजर दैट पीपल कैन बी नोन एज. अगर मैं उनको वर्चुअल रियलिटी या AR के अंदर मैं अपने लोगों को वहां पे प्रेजेंट कर रहा हूँ तो एक डिसएडवांटेज तो उसका ये है कि वो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि VR तो आपके पास एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट है ना. जो चीज वहां पे डेवलपर ने सेट की है वो वहां पे वैसे ही होनी है. बट अ वर्ल्ड इज एन अनप्रिडिक्टेबल प्लेस, दुनिया में कुछ भी हो सकता है. वो सारे चीजें मैंने अपने गेम में तो ऐड नहीं किए. So one of the biggest disadvantage is that it is different. The perception and the reality is totally different. This is a VR hindsight. I hope you are understanding. We can also Yes, use this sir. in scientific research. Scientific research में we can use this because scientists can rely on the visualization of elements. Atoms कितने हैं, molecules कितने हैं, structure क्या है, appearance क्या है. रियल वर्ल्ड में तो नहीं देख सकता ना. एटम्स इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स कैसे काम कर रहे हैं मुझे किसी को सिखाना है, मुझे किसी को पढ़ाना है, मैं कैसे बताऊंगा. क्या मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमूंगा या मैं उनको एक VR की हेल्प से उनको बताऊंगा कि ये चीजें किस तरह से काम करती हैं मेडिकली, हाउ द ब्लड मूव्स इन द वेन्स. सो it can also work in scientific research as well, and at the same time, it can also work in tourism as well. Like people who have disabilities, who are unable to travel, they can experience a computer-generated reality of tourist attraction. They can go from one place to another. This can allow people to experience the world, tourist attractions around the world.